Good morning students of class 9. Today I will teach you mathematics exercise 6.1. In previous video you have studied about exercise 6.1 to question number 1 to 3, and today we will study about question number 4, 5 and 6. So question number 4 is given as in figure 6.16. If x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Means we have given a figure. In this figure x plus y equal to w plus z, then we have to prove that AOB is a line. Means this is a line. We prove that this, if the sum of both angles is 180 degree, so we can say that this is a line because the sum of angles formed at a line is 180 degree. अगर इसको हमको प्रूफ करना है तो हमको ये दिखाना होगा कि इसमें जो एक लाइन पर जो बनने वाले एंगल हैं उनका सम जो है 180 अंश होगा. तभी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम लीनियर पेयर जो है कि एक लाइन पर बनने वाले एंगल है ये. जब एक लाइन पर बनने वाले एंगल है तो AOB क्या है, एक लाइन है. सो गिवन दैट x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. Now prove since x plus y plus w plus z equal to 360, because एक पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. तो x plus y plus w plus z equal to 360. Now we know that w plus z equal to x plus y, means at the place of w plus z we can use x plus y. Then x plus y plus x plus y equal to 360. Now 2x plus 2y equal to 360. Now taking 2 as a common, x plus y equal to 360. Then x plus y equal to 360 upon 2. Then x plus y equal to 180. So we can say that from linear pair AOB is a line and the angle x and y form that line AOB. So from linear pair x plus y equal to 180. हम कह सकते हैं कि AOB एक लाइन है, क्योंकि AOB पर जो बनने वाला एंगल है x और y है और उसका सम कितना है 180 अंश है, इसलिए AOB क्या है, एक लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर 6.17 POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Then prove that angle ROS equal to 1 upon 2 angle QOS minus angle POS. हमको एक फिगर दिया गया है और फिगर में ये बताया गया है कि OR जो है PQ पर परपेंडिकुलर है, और ये भी बताया गया है कि एक रे है OS जो रे OP और रे OR के बीच से होकर जाती है. मींस इट इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बट इसके मध्य बिटवीन से होकर जा रही है. सो गिवन दैट POQ इज अ लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. हमको ये दिया गया है कि POQ क्या है, एक लाइन है, और OR क्या है, PQ पर परपेंडिकुलर है. और प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू 1 upon 2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. देन प्रूफ में हम देखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब एंगल POS means this angle and angle ROS means this angle. The sum of both angles is 90 degree because angle ROQ is also 90 degree.
अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये बाकी बचा एंगल पूरा 90 डिग्री भी है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। देन वी कैन टेक एंगल QoS, एंगल QoS means this angle, the angle ROS means this angle. If we subtract angle ROS from angle QoS, then we can get angle QOR which is 90 degree. So we can write angle QoS minus angle ROS equal to 90 degree. From equation 1 and 2, right hand side is equal, so left hand side is also equal. Angle POS plus angle ROS equal to angle QoS minus angle ROS. Then by transferring rule, angle ROS plus angle ROS, angle QoS minus angle POS, then 2 angle ROS equal to angle QoS minus angle POS, then angle ROS equal to 1 upon 2 angle QoS minus angle POS. This question is proved. So question number 6 is given as, and last question of this exercise, which is given as that angle XYZ equal to 64 degree, and if we produce line XY to at P, then given that angle XYZ equal to 64 degree, and we produce XY is produced to the point P. XY is produced to point P. Then draw a figure from the given information. If ray YQ, here is a ray YQ, which bisect angle ZYP. Angle ZYP means this angle is bisect by ray YQ, means this angle and this angle both are equal. So we have to find angle XYQ means we have to find this angle and reflex angle QYP. Reflex angle QYP, this angle not. Reflex angle QYP means this angle. So given that, now you can understand the figure. So given that angle XYZ equal to 64 degree, and we have to find that angle XYQ and angle QYP reflex. We have to find both angles. So now we can find, let angle QYP equal to X, then
if this angle is x, then this angle is also x. So angle QYZ is also x. So x plus 64 equal to 180. Now 2x equal to 180 minus 64. Then x equal to 116/2. Now x equal to 58 degree. Then angle XYQ equal to 58 plus 64. Then 122 degree. Now angle QYP reflects equal to 360 minus 64 equal to 58 equal to 302 degree. This is both is answer of question number 6. Now your exercise 6 point is finished. 6.1 is finished. Now we have to study about parallel lines and transversal lines, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, and corresponding angles, vertically opposite angles. About these angles we have studied in another class, which is taken to tomorrow. So thanks for today's class. It's all.